morning, everyone. Myself, Deep Kaur. Food, clothes, and shelter are our basic needs because without it, it is not possible to live. So today, I am talking about food. That what is food? Food, the things that we eat, because it is very much important for the survival of human beings. It gives us energy for doing the daily works. So this is a reason that we need food. There are different kinds of food like in available nowadays in India: Chinese food, Indian food, Thai food. These are the varieties of food. uh, Now the people who eat food, they are also divided into three categories, that is omnivores, carnivores. And people who eat food also divided into two categories: vegetarian and non-vegetarian. Vegetarian who already eat all, who eat only vegetables, but the non-vegetarian who eat the non-veg things, like the flesh of the animals also. So now I am talking about my favorite food. My favorite food is veg biryani. I like it very much because it is really very delicious also, and also it is full of nutrients. So this is the reason that I like it most. And for making it, we need only 20 minutes to make. So this is a really very easy recipe. First of all, I share the recipe of this food with you, that how we may make it. For this, we need some vegetables, uh, half lemon, and some rice. So first of all, we fry the onions, then we fry the whole vegetables, and then we put the rice in the ball, and then we put the water in the bowl. So after one boiling it, it is prepared. So it takes less time. Another part that it is, because we add a number of vegetables in this veg biryani. So it is full of fiber, vitamins, and proteins. So it is a rich source of all type of nutrition. This is the reason that I love to take it. After to make it, I decorate the plate with this biryani. Food is one of the basic need. Certainly we need food to survive. Food to survive. Means food to survive. I like I like to eat various kind of food, but I like most Indian food such as Punjabi food. Mm, this is my favorite food for many reasons. Firstly, it is very delicious, full of flavor and healthy. Secondly, it is it is nutritious because it made vegetables and local spice. I like most rice and curry. It is made easily at our home. To prepare this food, firstly, rice is boiled for about 25 minutes, and then curry prepared using some local spices, onion, and olive oil. Hello everyone, this is Dheeraj Sharma. Today's my topic is food. Food is our daily need for life. There are various types of food in India. I belongs to Rajasthan. There are many types of food in Rajasthan like ghatta, dal bati churma, balu shahi, kachori, and many others. Food gives us nutrition and complete our daily need of work. My topic is food. Food is our basic need. We did not survive without food. There are different types of food: South Indian food, Chinese food, Rajasthani and Punjabi food. I like South Indian foods. There are different type of South Indian foods: dosa, idli, sambar. Hello friend, this side Arshdeep. I am from Hanumangarh. So today's my topic is food. Food is our basic need to stay alive, and it is the basic need of every living organism. uh, Food is different types of food in the world, because the different varieties of food. So
in India is most popular food. टिश्यू फॉर्मेशन में सबका रोल है, प्रोटीन का रोल है, फाइबर का रोल है, ठीक है, विटामिन का रोल है। तो हमारी जो मल्टीट्यूड, इनफ नहीं है फूड लेना, अकेला फूड इनफ नहीं है, बट मल्टीट्यूड वैरायटी ऑफ फूड इज एसेंशियल फॉर बेटर हेल्थ। हेल्थ की बात ही नहीं की, बेटर हेल्थ, सर्वाइवल एक अलग बात है, हेल्थ एक अलग बात है। मैं बीमार इतना रहूं परंतु सर्वाइवल तो है, सर्वाइव तो कर रहा हूँ। सर्वाइवल एक अलग चीज़ है। न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू हेल्थ के लिए बेटा, हेल्दी लाइफ के लिए, किसके लिए? हेल्दी लाइफ। गाल ही नहीं है किसी ने। नो वन रेज द इश्यू ऑफ हेल्दी लाइफ। सस्टेनेंस इज द टॉपिक which even we can sustain our life in a jail. Even if we are provided with 30 gram of rice daily, still we sustain, still we live. ਭਗਤ ਸਿੰਘ 70 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੈਠੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਮਾ 'ਚ ਪਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੈਂਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਸੈਂਸ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ। सर्वाइव एक अलग चीज़ है क्या नहीं? सर्वाइव करना एक अलग चीज़ है। सर्वाइव अगर तुम ऐसा फूड खाना शुरू कर दो जिसमें बिल्कुल भी फाइबर ना हो, फाइबर के बिना भोजन खाना शुरू कर दो, तुम्हारी स्किन बैरी रोग होता है, शायद बैरी रोग होता है, स्किन चढ़नी शुरू हो जाएगी थोड़ी। सर्वाइव फिर भी तुम कर रहे होंगे, सर्वाइव तो फिर भी कर रहे होंगे, यू आर स्टिल सर्वाइविंग। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द कैंसर, यू आर स्टिल सर्वाइविंग। सर्वाइव तो कर रहे हो तुम, बट इट्स द सर्वाइवल। बट हेल्दी लाइफ अलग चीज़ है। ये हेल्दी लाइफ अलग चीज़ है। हेल्दी लाइफ तो बोले नहीं है। नो वन रेज द इश्यू ऑफ हेल्दी लाइफ। न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल और हेल्दी लाइफ। फॉर पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू? न्यूट्रिशनल वैल्यू कीप अस हेल्दी। वो अपने हेल्थी रखते हैं अपने आप को। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का मेन काम होता है, ना कि सर्वाइव करना। ठीक है, सर्वाइव शायद तुम पट्ठे खा के भी कर जो, जो कुछ और ना मिले, जो कुछ भी ना मिले, सब कुछ खो लिया जाए थोड़े तो वास्को दी गामा निकले बाद चूहे खा गए सी, सुनी होनी है। सर्वाइव की तो 3-4 महीने ने सिर्फ चूहे मारने खाते डैक चो। ठीक है, तो जो सर्वाइव सी वो की सीगा? सर्वाइव सीगा। फर्क होंदा है सर्वाइवल ते हेल्थ जो दस रहा है। ठीक है, तुसीं समझिया करो इस चीज़ कि तुसीं किहड़ा पॉइंट किहड़ा चकदे हो। सर्वाइवल ते 5 मिनट बोल के, पर हेल्थ ते बोले ही कोई जरूरत नहीं। हेल्थी लाइफ वास्ते वैरायटी ऑफ फूड की बहुत बड़ी इंपोर्टेंस है। ठीक है, उदों बाद तुसीं गल की, चलो सर्वाइवल ते आ गया। उदों बाद मैम ने एनर्जी की गल की। एनर्जी कम प्राइमरली फ्रॉम फूड। आ गल सही है, प्राइमरली फ्रॉम फूड। वट यू ईट यू बिकम वट यू ईट। एक फ्रेज हैगी, यू बिकम वट यू ईट, जो डिनाई कर देगी। अगर मैं रोज़ बकरा मुर्गा खाना, मुर्गा बन जाऊँगा, फंग लगेंगे मेरे? नहीं लगते। ठीक है, मैं खाना मुर्गा पर मैं फंग देने लगे कि लगे नहीं लगते कि आ गल झूठ हो गई है कि यू बिकम वट यू ईट। पर हजे भी सिखाया जाता है, अपन सिखाया जाता है कि तुसीं ना खाओ, प्रेरणा वास्ते क्या जाता है कि मांस ना खाओ, कि तुसीं वही बन जाओ जिहड़ा करदे हो। ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड जा गया। फिर टाइप्स आ गए। तो तुसीं औखा टर्म मैम कित्थे उलझी? कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। हर्बीवोर एंड कार्निवोर सिंपल कर दो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। जो ना समझ आए तो वोकैबुलरी को बड़ी टफ चक्कर की जरूरत नहीं होती। मैम ने उलझी उत्थे जाके, मैम ने जिथे फॉल्टर द पॉइंट शी स्टंबल्ड वाज कार्नी एंड हर्बी। मैं समझ गया मैम कितने उलझेगी, पर मैं कुछ बोलिया नहीं, मैं बैठा रहा। चलो ठीक है। ठीक है, आ गलती की। तुसीं जो ना वर्ड औखे वर्ड याद करना बहुत जरूरी नहीं है, छोटे वर्ड ना काम चलता अपने, चला लो। ठीक है, उदों बाद मेक इट, वी कुक द फूड और मेक द फूड। कुक द फूड होंदा है कि मेक द फूड होंदा है? कुक द फूड होंदा। मैम ने यूज किया मेक द फूड। की यूज किया? मेक द फूड। ये भी एक कमी सीगी। फिर वारी वारी, वाइल यू आर डिस्क्राइबिंग एनी रेसिपी यू आर बाउंड टू यूज द इंपेरेटिव क्लॉज। वी से दैट leave the dish for 15 minutes on a boil and power the। भाई कहीं बार बार वी नहीं लगाना पड़ता, कहीं बार बार वी नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। इंपेरेटिव में कही जाती है, रेसिपी जब कही जाती है इंग्लिश में तो सब्जेक्ट नहीं आता, तो रेसिपी में कहने का तरीका ये एक इंपेरेटिव यूज किया था। क्या यूज किया था? इंपेरेटिव। बार बार वी रिपीटिशन बहुत होगी, फिर क्या होगी?
रिपीटिशन होगी, रिपीटिशन के मार्क्स कट्टे जाते। रिपीटिशन माज एनी लैंग्वेज किल एनी लैंग्वेज, रिपीटिशन किल्स एनी लैंग्वेज, रिपीटिशन किल कर दिया लैंग्वेज, बिल्कुल सच्चाई है। बार बार वी लाई रखा तब हर बारी लीव इट फॉर बॉयल द डिश फॉर 15 मिनट्स, लीव इट फॉर 3 मिनट्स एंड while the dish is cool power some flour on it। कहीं भी की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी डिश को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं तो नहीं अच्छा डिश मेरी नहीं बनाई गई जिंदगी में, पता भी नहीं ज़्यादा, पर इंपैरेटिव की जल्दी कभी जल्दी इंपैरेटिव तो क्या सकते वी पर गंदा है, बिल्कुल गलत तरीका है। बारी बारी कहूँ वी मेक इट, वी डू इट, वी डू इट, वी डू इट। अगर रेसिपी बना रहे तो गंदा ही कर रहे हैं, पर्सन इज डूइंग द एक्ट। तब इंपैरेटिव के सब्जेक्ट हटा दिए, सब्जेक्ट को रिमूव कर दो और रेसिपी को चलने दो, जो रेसिपी डिफाइन कर रहे हैं। रेसिपी बढ़िया बात है, टाइम खींच देती है, ठीक है। आफ्टर मेकिंग मैम ने यूज किया पाव, POUR पा नहीं होता, ड्रेसिंग होती है और उसके ऊपर सीजनिंग होती है, उसकी सीजनिंग बोल देते हैं। एक वर्ड है धीरज ने गार्निश बोलिया सी, गार्निशिंग होती है, की होती है फूड की गार्निशिंग होती है। फूड बिफोर सर्विंग एंड आफ्टर कुकिंग देयर इज ए फेज विच इज कॉल्ड ड्रेसिंग, सीजनिंग और गार्निशिंग। पहले जब फूड बन के तैयार हो गया और अब सर्व किया जाना है, उसके बीच में गार्निशिंग की जाती है। क्या किए थे? कोरिएंडर, वी यूजुअली यूज अनियन लीव्स एंड कोरिएंडर। कोरिएंडर अनियन लीव्स का यूज करते हैं अपने गार्निश करने के लिए। बेसिकली पंजाबी में दो ही होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पत्ते हैं जो यूज किए जाते हैं, पर अपने यहाँ पे दो प्रमुख हैं, कोरिएंडर लीव्स और अनियन लीव्स। अनियन लीव्स होती है, सबसे नेम होगा अनियन लीव्स का भी मुझे नहीं पता, हर वोकैबुलरी पता होना मैं जरूरी नहीं है, ठीक है। उनका भी कोई नाम होगा। उसके बाद में फिर इसकी बारी आई गुरप्रीत की, फिर सर्वाइव है, फिर सर्वाइव है। भी हेल्थ की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जगह ही नहीं कि वेरियस फूड ठीक है वधिया, पर अज बोली तो सी डिलीशियस वधिया वर्ड यूज किया ने, फ्लेवर, फ्लेवर द फूड मस्ट बी रिच इन फ्लेवर so that we can enjoy it, so that we can enjoy it। in order to our enjoying a food, the any food must be rich in flavorness। flavorness थोड़ी चीज को flavorness जरूरी है, फ्लेवर होता है, ठीक है। हेल्थ यूज किया है वर्ड। न्यूट्रिशियस वैल्यूज यही है, न्यूट्रिशियस वैल्यूज हर फूड, ईच एंड एवरी फूड कंटेन्स एटलीस्ट सम न्यूट्रिएंट्स, सम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कोई फूड चूज कर लो, राइस कर लो, पोटैटो कर लो, कोई कर लो, कैरेट कर लो, कुछ भी लो, ठीक है। उस बाद ने राइस बॉयल्ड, राइस का एग्जाम्पल लिया ना, राइस बॉयल्ड। फिर इन्हें एक गल कहती इन ए वीकेंड, वीकेंड नहीं वीकेंड चाहती सी, हफ्ते एक बार खानी है। वीकेंड सैटरडे संडे होंगे, सिर्फ की होंगे सैटरडे संडे होंगे। मैं समझ गया सी बाबा होना समझना सब की कहना चाहते हो, ठीक है। भी 2 or 3 टाइम्स इन ए वीक कहना सीगा, कहेगी वीकेंड, वीकेंड कहते ही चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। वीकेंड का मतलब सिर्फ सैटरडे और संडे होता है, शनिवार एतवार होता है, ठीक है। शनिवार एतवार ਨੂੰ ਆਪਾਂ नहीं कहते कि वीक इन एवरी वीक, ये गलती हो जाती है करते करते। फिर रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट ही कहने, आप पंजाबी है अंग्रेजी नहीं, सुन लियो घरे जाके। रेस्टोरेंट जो वर्ड है वो पंजाबी है, ठीक है। जिवें ड्राइवर पंजाबी है, अंग्रेजी ड्राइवर नहीं होंगे, तो रेस्टोरेंट भी नहीं होंगे अंग्रेजी, ठीक है। उदों बाद बात करें समीक्षा, नाम भूल जाना मैं। उसके बाद समीक्षा की बात करें तो बेसिक नीड है, सही बात है। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर आर प्राइमरी नीड्स, प्राइमरी नीड है। इसके बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, अगर नहीं हो तो तीनों। इवन द केव पर्सन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ शेल्टर, वो भी सुरंग बनाते थे। इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे buried deep caves, very deep caves was made in order to सर्वाइव देम, उनके बचाने के लिए, उनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए। फ्रॉम द वेरियस अटैकर्स, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए, सो दैट दे वॉन्ट बिकम द प्रे ऑफ एन एनिमल, ताकि शिकार ना बने, किसी एनिमल का शिकार ना बने। तो यही करते थे, सुरंग बनाते थे। आजकल घर बनाने लगे, आजकल क्या बनाने, घर बनाने लगे। डोसा, इडली, सांभर आ गया। फिर उसके बाद में मैदा, मैदा इंग्लिश वर्ड नहीं है, रिफाइंड फ्लोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफाइंड फ्लोर बोला जाता है शायद, I don't know exactly, I don't know exactly the term, but as far as I am thinking that's called the wheat refined flour के अंदर, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। ऑयल बेक इट फॉर 30 मिनट्स, हाँ तो इंपेरेटिव क्लॉज यूज की है, तो वी बारी बार नहीं लाएगा। बेक इट फॉर 35 मिनट्स। इस इंस्ट्रक्शन आर इन द imperative part, but what else that comes to your mind? First of all I want
you that cuisine food. The big mistake we make that we choose particular food. आप एक ही फूड चक लेने. There is nothing else to say. Elaborating it becomes impossible as soon as you restrict yourself to one food. आप एक ही फूड उठा लेते हैं, जैसे आपने कहा छोले भटूरे. अब I can ask you to further elaborate it. Examiner can ask you to further elaborate it. You have nothing to say. अब छोले भटूरे कैसे? But if you have chosen South Indian food, there are varieties. There are varieties हैं वहाँ पे. You can extend, you can faithfully justify your region, you can explain beautifully. एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्यूटीफुली. आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए. पर आपने अगर डोसा उठा लिया, डोसे के बारे में कितना बोलोगे? बच्चों ने गलती की, छोले भटूरे उठा लिए, राइस उठा लिया, राइस के बारे में बोल ही नहीं पाओगे. फिर राइस के बारे में टू थिंग्स कम्स. If I choose the topic rice, then only two things come into my mind. That is, one thing is recipe and other one is eating. Nothing else. If you are choosing rice, you have to put the variety. आपको variety लानी होगी. There are multitude of dish which includes rice. बहुत सारी डिश हैं जिनमें राइस आता है. फिर आप उनको elaborate कीजिए. पर हम we stick to single dish. हम सिंगल डिश पे रुक जाते हैं वहां पर. For example, if I saw while I was staying in Bangalore, I regularly visit Toscano. Toscano is known for Italian food, and first of all, I wasn't aware of the Italian food. But afterwards, I regularly visited there. I came to know the fragrance of food, the smell of food. I enjoyed the food a lot. You have described a bit about the health issues, the nutrient values. I needn't do that again. फिर मैं ले लिया. फिर while the thing first and foremost comes to your mind is the fragrance. You can explain how the fragrance attracts you. As soon as the food is served in the platter, the vapor comes to my nose, and as soon as touches my nostrils, the entering of it like rejuvenating me. My mind is blown up. I am eager to have it, but I stop myself because I want to stay longer. I take only a small bit of it, let it come to my lips, then the dish comes to my tongue. Before it reaches the swallowing part, the dish sits nicely on my tongue. The flavor of it really impresses me a lot. कोई भी dish चख ली, the flavor impress कर रहा है दोनों का. If you are taking the dish in a hurry, you can't grasp the idea what the smell, what the fragrance is. ਭੁੱਖੜ ਹੁੰਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਨੇਗੇ, ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਦਾ ਠੂਸਿਆ. But usually we go for everything. We want to feel the texture of the food. We want to feel the fragrance of the food. We want to feel each and every our taste buds. We want to how our taste buds perceive the food. हमारी taste buds कैसे perceive करती हैं food को. But first comes my finger. As soon as I reach the food and I touch the food, the succulent, the juiciness is the part which impresses me the most. Food juiciness ਹੁੰਦੀ है. You can say the crunchiness हो सकती है. थोड़ा food ਜਿਹੜਾ pick ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, it can be soft, the softness of the food. My fingers really get excited as soon as I touch the food. As soon as I touch the food, my fingers get excited as soon as I touch the food. Between my fingers, a small crunch of the food rests. ठीक है, food rest करता है. I am feeling the texture of the food through the finger. Tactile जो sensation है वहाँ feel कर रहा हूँ. And food is always compared equal to the love making. Food is the source of our survival. It's the truth. But food is needed to live a better healthy life. Healthy life के लिए food की importance है.
Afterwards, I can take several Italian examples: the spaghetti, the pasta, the ravioli. These are the lasagne. So lasagne, I can describe these dishes in particular: the fragrance of them, the taste of them, the sweetness, bitterness, whatever, the sourness, whatever comes to your mind, you can elucidate the further. Food sweet हो सकता है, sweetness हो सकती है, but what else it can contain? It can contain every food contains ingredients. As far as the Italian foods are concerned, they are rich in cream. They are rich in cream and cheese. Mozzarella cheese obtained from the Italian buffaloes is really impressive. Is really impressive. It tastes really nice while mozzarella gets into our mouth. The melting of it really give us the imagination of having that nice food. ठीक है, imagination change हो जाती है. Mozzarella, ship cheese, you can linger a little bit on non-vegetarian food. Shrimp are there, झींगे, and fish is there on the menu. Fish is also there on the menu, and seafood, it's all culminated within the whole umbrella of seafood. Seafood के अंदर आया था सारा का सारा जो टर्म है वो seafood के आया था. You can describe them further. Though primarily I'm a vegetarian, but I really love to have those foods. I really love to have those foods occasionally, only occasionally. Primarily I'm a vegetarian. Occasionally I love to have those foods. And the best part of Italian restaurant Toscano was the fish. I really enjoyed fish a lot. Their variety of fish really amazed me. You are putting the variety in your language. Once you are saying impressive, once you are saying amazing, once you are saying exciting. This is the part of variety. In any exam, in any English exam, examiner is checking your vocabulary also. He's going whether he's repeating or not. The person in front of is repeating or not. अगर repeat कर रहा है, your marks will be deducted. अगर repetition नहीं है, it's your strength, and repetition is weakness. Ravioli, Chinese food. Afterward, you have gone. I am coming to that point, ma'am. Let me explain the content. Afterwards, you have prepared the food. You have prepared the food. Nothing else to be done. But still comes the garnishing. Garnishing of any chef makes the food really particular to that chef. Particularity brings particularity. वो फूड गार्निशिंग से पहले एक जर्नल था, जब उसकी गार्निशिंग होगी देन द फूड बिकम्स ए स्टैम्प ऑफ दैट शेफ. स्टैम्प बन गया उस शेफ की. क्या बन गया? स्टैम्प बन गया. गार्निशिंग में यू कैन यूज मैनी लीव्स, मैनी काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स. Coriander leaves and onion leaves, but you can further add. You can have many words describing the food's vocabulary. And garnishing complete hogi, then comes the time for serving. Serving, you can describe a bit where you are sitting, what kind of environment you are in. There is a old mahogany table fitted with small chairs, and the environment is really cozy. The environment is cool, the environment is warm. You can use your own words, your own imagination. ठीक है, it's well ventilated. It adds beauty, additional beauty to the food. It adds additional beauty to the food because we are emotional. We are emotional. Human beings are emotional. We take emotions for granted. हमें इमोशन मिले हैं, बचपन से ही मिले हैं. ठीक है. The environment, if the food is good and you are sitting on the cadaver of a flesh of a decaying animal, will you enjoy the food? Are you going to enjoy the food if decaying animal is beside you? सड़ा हुआ जानवर तुम्हारे पास पड़ा है, फूड बहुत टेस्टी है, ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਖਾਣ ਚ, ਖਾ ਲੋਗੇ? ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਗਾਂ ਰੱਖਤੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਖਾ ਲੋਗੇ? ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ? नहीं आनागा. So you can describe the atmosphere. You can describe the atmosphere. You can take the atmosphere. ठीक है. You can take that I was
at that time I was really happy. It was the best meal I have ever had. I was very happy. I enjoyed the food a lot. Every time I do enjoy the food, but that particular time I was extreme of myself. I was on cloud nine. Okay, I'm top of the world, and I enjoyed the food. I relished the food the most. ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, बोलना तेरा कुछ है तो तुझे डरने लग गया नहीं थी आगे कि हो कि जाओ।